Great. Assalamu alaikum ji, Bismillahirrahmanirrahim, and a very warm welcome to this session of Noor International University's Fireside Chat Sessions. आज हमें join कर रहे हैं Dr. Omar Saif sitting across us on the Zoom window. मैं quickly Dr. Saif का तारुफ करवा देता हूँ, and then we'll hand it over to Omar for speaking more to us about some of the stuff that he's been doing. So first of all, thank you, Omar, for joining us, and I'll quickly run into an intro. Dr. Omar Saif is a graduate of MIT, Massachusetts Institute of Technology, and an alumnus of HSM College, LUMS, and Cambridge University. More importantly, he was the chairman of the Punjab Information Technology Board, PITB, and was also the founder and vice chancellor of the Information Technology University, ITU, in Lahore. Dr. Saif has done a PhD from the University of Cambridge. He is the founder and CEO of surveyauto.com, which I hope we will be talking about briefly today, as well as Khudi Ventures. Heading Khudi Ventures, where we are replicating successful consumer internet products in the Pakistani market, including niche social networks, online advertising platforms, digital payments, and e-commerce. Dr. Omar Saif has also hosted a TV show on Pakistan's largest TV channel, Geo News. The talk show was called Geo To Essay, which was inviting inspiring Pakistanis to share their stories in a TED-style format. When it was running, it's one of the most watched TV shows in Pakistan. He was also part of Idea Karodon Ka on Neo TV, which became Pakistan's equivalent of Shark Tank. And with that wonderful intro, Omar, thank you again for joining us, and a very warm welcome to today's session. Really appreciate you joining us. So, sir, I know, mashallah, आप एक professor हैं, and उस professor होने के नाते भी, I would say, can you maybe हमें आगाह करें on today's wonderful topic? Pakistan has arrived. Like Salim, you've gotten the most important bit of this introduction, that we were together at HSM. So we were. Of course. So of course, so that goes without saying. I think, of course, proudly, आपकी introduction में ये state करना कि जी you. A lot of people actually don't mention the alma mater from where they started, but yes, mashallah, Umar and I were together at HSM, and we go a long way back. Thank you again. And congratulations for starting this new university. And I've been observing this from some distance, but mashallah, it seems to have come along very well. And it seems to be on a trajectory to become a great university. Pakistan is in dire need of good universities. And I'm glad that you've taken this step. And I wish to congratulate you for your success. And also to the students who are tuned in today, because नई यूनिवर्सिटियां बड़ी कम बनती हैं किसी भी मुल्क में, and universities are structures that outlive all of us. So one day Salim and I will go away and all of you will go away, but inshallah this university would still be there. That's how universities are. They have this unique feature that they outlive generations and become institutions by themselves. And therefore you are maybe the kind of the pioneering initial batch of this university. You've taken the leap of faith. You joined a new university. I know how difficult it is to convince people to join a new university. I started one just a few years ago, and just knowing that there are 350 of you in the first batch is very heartening. And Salim, I have no doubt that this inshallah will grow, and you will keep an eye towards academic quality and output, just as you do with all the other things that you do. So now with this, I have a talk. My talk is a little edgy in the sense that it offends some people. But my life motto is that whenever I talk, I've been a college professor, so I've given plenty boring lectures. Like, on invited talk, I try and be deliberately provocative. Otherwise, what's the point, right? So goal ये है कि इस वक्त ऐसी बात कही जाए जिससे आप मुत्तफिक भी हों, और ऐसी बात कही जाए जिससे आप इख्तलाफ भी करें, लेकिन जो भी बात कही जाए वो आपको सोचने पे जरूर मजबूर करे. So that's with that intention I have this talk, and you can certainly ask questions Wonderful. as well. So here is my talk now. The title of my talk is that your moment has arrived, right? And you in this case is the youth of Pakistan. It is the 350 people who've taken the leap of faith to join a new private university in Pakistan, right? तो अब आपसे सवाल ये है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सालिम साहब? बिल्कुल जी, it's being shared right now. तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को 3 हिस्सों में द्वार में डिवाइड किया जाए, एक 1940 और वो वाला दौर, और फिर 1960 और वो वाला दौर,
और फिर आज 2020 और उसके लगभग के साथ। तो सवाल ये है कि अगर आपको अमीर बनना है, लेट्स से दैट इज वन dimension of success in this world, that you become independently wealthy, you become financially independent, you have enough wealth to have enough resources to make some important contribution to this world, right? Wealth is an important component in this. So let's just focus on that. There's fame, there's of course compassion, there's lots of other elements that go into success, but let's just focus on the obvious, maybe superficial one, which is wealth. So let's say if you wanted to be wealthy in 1940, what would be your best strategy? That's the question I have. So maybe I can ask this question of Salim, because I can't hear other people and people can't respond to me. What would be your best strategy to become wealthy in 1940 if you were living in Pakistan? आप आज पैदा हो 1940 में पैदा होते और यूनिवर्सिटी में आते और अमीर बनना चाहते तो क्या करते भाई? What would be your best strategy, best hope? My thought on this, Dr. Saab, would probably be either to go into what was an absolute advantage for Pakistan at that time, agri orientation. Yeah, on the other hand, I think there was a vast industrialization at that time in the region, in the subcontinent. So going into a new industry, if one had the capital, would be the second choice. So spot on. So you walked right into it. You walked into the little trap that I laid out for you. So the first, actually in 1940, the best strategy was to have very large agricultural land to be wealthy. But the trick there is that therefore you had to be born wealthy. The only hope of being wealthy in 1940 was that you had to be born wealthy. अगर आप पंजाब की लैंडेड एलीट नहीं है, या आप सिंध के वडेरे नहीं है, या आप बलोची सरदार नहीं है जिसके पास बहुत सारी जमीन है और उसके ऊपर फसल लग सकती है, और आप वहाँ के चौधरी हैं और वहाँ से आप कोई सियासत वासत कर सकते हैं, तो ठीक है, आप अमीर होंगे. लेकिन सर, और स्लिम चांस, you are an ordinary guy like me going into college, graduating from a small university in 1940, slim chance that you will become very wealthy. In fact, if you look back, आपको इस रूल की एक्सेप्शंस बहुत कम मिलेंगी. ऑफ कोर्स मिलेंगी, क्योंकि इंसान सारी दीवारें तोड़ के आगे निकलने वाली अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, लेकिन चांस बहुत कम है. The odds are stacked against you, because 1940 में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म होते तो, और आप किसी अमीर घराने से ना होते, किसी जमींदार अमीर घराने से ना होते, तो बड़ा कम चांस है कि आप अमीर हो पाते. Now let's fast forward to 1960, और सालिम साहब ने इसका जवाब दिया. 1960s when the vast industrialization in Pakistan began to happen. तो 1960 में अगर आप अमीर होना चाहते तो आपको कोई सनत लगानी चाहिए थी, आप सनतकार बनते. लेकिन उस पर भी एक केविएट है, वो ये कि सनत लगाने के लिए बहुत सारा सरमाया दरकार है. वो सरमाया किधर से आएगा? वो आएगा, आप अपना लैंड ग्रहण रखेंगे, किसी जाके गिरवी रखेंगे आप किसी बैंक के पास, और आपको सरमाया देंगे तो आप इंडस्ट्री लगाएंगे. तो मेरे भाई, अगर आपके पास 1940 में जमीन नहीं थी तो आपके पास 1960 में सनत भी नहीं. Right? So if you weren't wealthy, if you weren't born wealthy in 1940, slim chance that you would become a very large industrialist in 1960. In fact, this was documented. This was the time when lots of Harvard economists were running around in Pakistan, and General Ayub was pretending to run this country, and he actually openly said that there are only about 300 families in the country that control the entire wealth. ये वो 300 घराने हैं जो कि इस मुल्क में अमीर थे. वो इसलिए थे क्योंकि उन 300 घरानों के पास ही वो रिसोर्सेज थे जिसकी बुनियाद पे कोई बैंक आपको सरमाया देने को तैयार था, और आप जाके कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते थे. तो 1960 में अगर आपने अमीर होना था तो इसका मतलब ये था कि आप 1940 में अमीर पैदा हुए थे, और 1960 में हम मजीद अमीर हो गए. अब आप नजर दौड़ा के देखें तो आपको एक्सेप्शन टू दिस रूल बड़ा ही कम नजर आएगा. एक्सेप्शंस हैं ऑफ कोर्स, अगेन इंसान मेहनत करके और अपनी हिम्मत से आगे निकल सकता है और सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकता है. लेकिन मतलब the rule stands. 80% of what you would see around you would be people who were either born wealthy in 1940 and hence became big industrialists in 1960, because banks were willing to give them the capital required to setting up a large industrial unit. Now fast forward to 2020. You are a youth graduating from a university in Pakistan. What's your best chance of becoming wealthy? Technology, angel investing, you've got your VCs coming into the country, logistics, e-commerce. Yeah, so start a company, start a tech company. 2020,
start a tech. You don't have any resources. कोई पैसे नहीं है, अमीर नहीं है, कोई वडेरे नहीं है, कोई बहुत बड़े सनतकार नहीं है, कोई किसी बैंक ने अरबों का आपको कर्जा नहीं दिया हुआ, लेकिन आप एक गरीब घराने से आप 2020 में यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी पढ़ रहे हैं, तो आपके अमीर होने का चांस है, क्योंकि आप एक कंपनी शुरू कर सकते हैं और वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन सकती है, फेसबुक बन सकती है, गूगल बन सकती है, ह्यूलेट पैकर्ड बन सकती है, एप्पल बन सकती है। इनफैक्ट ये तमाम कंपनियां बिल्कुल इसी तरह बनी थी। ये दो बच्चे थे गरीब घराने से एक गैराज के अंदर, वहां पे उनके पास एक अच्छा आइडिया, तो उन्होंने काम शुरू किया। ह्यूलेट पैकर्ड भी ऐसी बनी, फेसबुक भी ऐसे बनी, माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसे बनी, एप्पल भी ऐसे बनी, फेसबुक भी ऐसे बनी। जितनी बड़ी कंपनियां इस वक्त दुनिया को कंट्रोल करती हैं वो तमाम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फाउंडर्स ने बनाई। और किस तरह बनाई? एक अच्छे आइडिया को लेकर, विद देयर स्किल, देयर एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंस, they founded these tech companies which were innovative and not only changed their life but changed the destiny of the world that we live in, right? So they made such a huge dent in this world that we see their presence and fingerprints all around us. So that's 2020. Hence, my friend, your moment has arrived. You didn't have a moment in 1940. You didn't have a moment in 1960, but now your moment is arrived. And that's not just a Pakistan phenomenon. फोर्ब्स एक बड़ा मशहूर मैगजीन है और उसके अंदर 1982 में उन्होंने फहरिस्त एक पब्लिश करनी शुरू की, विच वाज द 100 richest people in the world. So 1982 में पहली बार फोर्ब्स ने एक फहरिस्त पब्लिश की ऑफ पीपल हु वर द 100 richest people in the world. उस वक्त 60% लोग, मतलब 100 में से 60 लोग वो थे जिनकी वेल्थ विरासत में मिली उनको, इनहेरिटेड वेल्थ थी। 100 में से 60 वो लोग थे जिनकी वेल्थ इनहेरिटेड थी, विरासत में मिली। और बाकी सारे कौन थे? जिनके पास या रियल एस्टेट थी या ऑयल था। ठीक है, तो या तो आपके वालिद के पास रियल एस्टेट और ऑयल था या आपके पास रियल एस्टेट और ऑयल है। दैट्स द ओनली वे यू कुड बी रिच इन 1982 की जो लिस्ट है अमेरिका की फोर्ब्स से, अगर आप उसको देखें तो 60% लोग वो हैं जिनको इनहेरिटेंस के अंदर विरासत में वेल्थ मिली, वेल्दीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और बाकी जो है वो ज्यादातर लोग वो थे जो कि रियल एस्टेट या ऑयल के बिजनेस में थे। ठीक है, जो मैं आप तो नहीं कर सकते। मतलब प्लॉट खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना भाई, 4 करोड़ रुपया नहीं है तो डिफेंस में कहाँ प्लॉट खरीदोगे, कहाँ से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करोगे? रिफाइनरी लगाने के लिए कई लाख रुपया और चाहिए होता है भाई, नहीं है तो रिफाइनरी तो लगा सकते हैं। तो देयरफॉर दैट बिजनेस इज क्लोज्ड फॉर यू, you know, you need to move on and find something else to do. But that's what 1982 was. Fast forward to 2020, 60% of the richest people in the Forbes list of wealthiest people in the world, 60% are founders. वो लोग जिन्होंने कंपनियां शुरू की हैं, सिर्फ टेक फाउंडर्स नहीं, बट फाउंडर्स, पीपल हु स्टार्टेड कंपनीज। सो 100 में से 60 वो लोग हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ रियल एस्टेट या ऑयल से आ रही है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं 100 में से। और 8-10 में से 8 रिचेस्ट, पहले 10 जो रिचेस्ट हैं उसमें से 8 टेक को फाउंडर्स हैं। ये लिटरली मुझे आप जैसे लोग हैं जिन्होंने आईटी पढ़ी है, गरीब घराने से हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हैं, ब्रिलियंट है, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और दुनिया के अमीर तरीन 10 लोगों में से 8 वो हैं। और आप उन सबको जानते हैं, वो मार्क ज़करबर्ग है, वो जेफ बीजोस है, वो बिल गेट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 8 में से 10 वो लोग हैं रिचेस्ट जिन्होंने, जो टेक फाउंडर्स हैं। अच्छा, सारी कहानी में जस्ट टू कंप्लीट द कहानी, अमेरिका में ये मोमेंट 1892 में भी आई थी, 1892 में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली बार शुरू, मैस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुई। दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कुड गिव यू एडवांटेज। तो जो लैंडेड एलीट डिसरप्ट हुई अमेरिका के अंदर, बाकी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में 1892 में होनी शुरू हुई, क्योंकि तब मैस प्रोडक्शन शुरू हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी आ गई। वो टेक्नोलॉजी कम टेक्नोलॉजी कहते हैं, बट टेक्नोलॉजी टू मैस प्रोड्यूस गुड्स, राइट। और वहां पे उस वक्त भी डेमोक्रेटाइज हुई थी वेल्थ गॉट डेमोक्रेटाइज, आम आदमी तक वेल्थ पहुंची थी वहां पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिस्टम यूं सेटअप थे कि आम आदमी तक वेल्थ नहीं पहुंची। और इनफैक्ट जब 1960s में रिव्यू लिया गया, उस वक्त महबूब उल हक थे और सदर अयूब एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उन्होंने ये डिसाइफर किया कि तो 300 सिर्फ घराने हैं जिनके पास सारे पाकिस्तान की वेल्थ है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज हो गया, लेकिन वेल्थ गॉट सो कॉन्सेंट्रेटेड इन द कंट्री एंड सो ऑन। अच्छा, स्टार्टअप फाउंडर्स क्यों दुनिया में 8-10 जो रिचेस्ट लोग हैं दुनिया में, रिचेस्ट जो लोग हैं दुनिया में, उसमें 8 टेक फाउंडर्स क्यों हैं भाई? ये कैसे हो सकता है? मैं जब कह रहा हूँ आपकी moment has arrived, so what is so unique in this moment that your moment has arrived? So one, a startup doesn't require huge capital.
It just requires 2 kids in a garage with a second-hand computer and a table. That's all it requires. That's exactly how Salesforce was made, and that's how Amazon was made, and that's how Microsoft was made. Literally, that is how these companies are made. Doesn't require a lot of capital. 2, it has a unique funding model. The model is no longer based on a loan, जिसमें आप कोई चीज प्लेज करें जाके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. आम इंडस्ट्री लगाने के लिए आप जाते हैं बैंक के पास, आप जाके कहते हैं मेरे पास ये जमीन है, इसको मेरा घर है बड़ा, बहुत बड़ा, इसको प्लेज कर लो, मुझे 40 करोड़ रुपया दे दो, मैंने शुगर मिल लगा दिया. अगर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते. लेकिन in this case, in a startup, there is a unique funding model, and this was, I think, the best invention of the capitalist world. The invention is called venture capital. इसका मतलब ये है कि आप सालिम साहब के पास जाओ कि यहाँ पे अमीर आदमी है, आप मेरे पे बेट करें, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास एक आइडिया है और मैं कंटेंट और आइडिया इंप्लीमेंट करके बहुत बड़ी कंपनी बना सकता हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दें और उसके इवज मेरी कंपनी में हिस्सा लें. इसका मतलब ये है कि यू शेयर माई रिस्क ऑफ एक्सिक्यूशन. आप मुझ पे यकीन रखें, मेरी कॉम्पिटेंस पे यकीन रखें. So invest in my company. I can't pledge you anything. I can guarantee you anything. All I can do is give you some share of my company. So share the risk with me. That is venture capital. कि आप equity दे दें अपनी कंपनी में किसी को पैसों के बदले. And therefore you don't need wealth to create wealth. All you need is a good idea and competence to execute it. And that's exactly how Microsoft and Facebook, etc., got started. This model of venture capital democratizes wealth. So because there was never an opportunity to democratize wealth. Democratize का मतलब है आम आदमी तक wealth को पहुंचाने का कोई आसान दुनिया के पास जरिया नहीं था, क्योंकि wealth से wealth create होती है. In this case, someone could take a bet on you because you are so bloody competent that you could create a Facebook. You might be 19-year-old and you may have just dropped out of college, but you are smart. You have a great idea and you can execute. And I'll take 20% of your startup by putting 2 crores in your idea so you can implement it. That's venture capital. So it's so unique, right? And finally, when we think of tech companies, we think of computer applications, right? Matlab, Windows operating system, Apple operating system, Android devices. A tech startup is not that anymore. Is Uber a tech startup? No, it's a transportation company. Is Food Panda a tech startup? No, it's a restaurant. Is Netflix a tech company? No, it's a media company. Is PayPal a tech company? No, it's a bank. So tech companies have disrupted right, left, and center. They've disrupted all traditional industries, from telecoms to banks to logistics to food delivery to ride sharing. So tech company is no longer a tech company. Therefore, the opportunity is very big. It's not creating a piece of software for people who use computer. It is how people transport themselves from point A to point B. It is how people eat, how people entertain themselves, how people educate themselves, right? That's the opportunity. The opportunity is to use technology to disrupt these huge, big industries. So therefore, the opportunity is huge. Now, let me bring this back to you, sir, which is why, so moment may have arrived globally, but why do I say that your moment has arrived? These 350 students in Noor University, why has your moment arrived? And your moment has arrived because you are sitting on a huge opportunity. And how huge is that? It's huge because you are living in a country that's the 5th largest country in the world. We don't say that often. We don't remind ourselves of that often. But you live in the 5th largest country in the world. And 73% of that country is urban. ये वो लोग हैं जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. ये जाहिल गरीब गांव में रहने वाले लोग नहीं रह गए. ये शहरी बाबू हैं. 73% दुनिया के 5वें बड़े मुल्क के अंदर. That's your target market. It's already there. That's the opportunity. इस मुल्क के अंदर 5 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हर साल पैदा होते हैं. 5 लाख. बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी टोटल आबादी 5 लाख है यूरोप के अंदर. पाकिस्तान में 5 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हर साल यूनिवर्सिटी से निकलते हैं. इतना पढ़ा लिखा मुल्क है, इतनी स्किल्ड लेबर है. 5 लाख लोग हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं. पाकिस्तान के तकरीबन 90% घरों में मोबाइल फोन है, जिसके थ्रू आप उनको चीजें बेच सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. आपका कस्टमर आपको एक्सेसिबल है ऑन अ सेल फोन कॉल, और वो 90% घरों में अवेलेबल है. पाकिस्तान की टेली डेंसिटी 87% हाउस होल्ड्स है. 161 मिलियन सेलुलर यूजर्स है इस मुल्क के अंदर, जो कि दुनिया की 8वीं बड़ी सेलफोन मार्केट है. 8वीं बड़ी. लाइकवाइज ये लोग ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल फोन है इस्तेमाल नहीं करना आता.
पाकिस्तान के अंदर 70 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। ये वो लोग हैं जो इंटरनेट को फैक्ट्री समझते हैं, इंटरनेट पे ई कॉमर्स की चीजें खरीद सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं, चीजें बेच सकते हैं। ये इंटरनेट यूजर्स हैं 70 मिलियन। और ये दुनिया की 14 बड़ी आबादी, 14वीं बड़ी मार्केट है फॉर इंटरनेट यूजर्स। ये कितनी बड़ी है? फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन से, इटली की पूरी पॉपुलेशन से और यूनाइटेड किंगडम की तमाम पॉपुलेशन से बड़ी पाकिस्तान के सिर्फ इंटरनेट यूजर्स की तादाद है। तो आप कभी ये तो नहीं सोचते यार फ्रांस में $1 बिलियन स्टार्टअप नहीं हो सकती, वो तो है छोटा सा मुल्क है। नहीं यार इटली में तो $1 बिलियन स्टार्टअप नहीं होती। नहीं यार इंग्लैंड में कौन कर सकता है $1 बिलियन स्टार्टअप? करते हैं ना लोग। तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आपके तो इंटरनेट के यूजर्स की तादाद उनकी कुल आबादी से ज्यादा है, कुल आबादी से ज्यादा। राइट। फाइनली ये कि ये लोग सिर्फ ये नहीं कि उनके पास कोई इंटरनेट का पैकेज है, वो तो एक्टिवली इंटरनेट इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो 40 मिलियन है पाकिस्तान में, और भी नंबर बढ़ गया। और 40 मिलियन इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। कभी आपने सोचा कि कनाडा यार ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं वहां पे? करते हैं ना लोग। उनकी टोटल पॉपुलेशन की तादाद पाकिस्तान के फेसबुक के यूजर्स की तादाद से कम है। कनाडा की कुल आबादी की तादाद पाकिस्तान के फेसबुक के यूजर्स की तादाद से कम है। दैट्स योर मार्केट, दैट्स हाउ ह्यूज द अपॉर्चुनिटीज। Now at this point, a lot of people turn around, and I give this talk globally because I love this country and like talking about it. So I give this talk globally, and at times my Indian friends, and I get a lot of them in my audience, turn around and say, well, but it is a poor country. Right? So you may have internet users, you may have a large population, लेकिन ये पैसे नहीं इनके पास, इंटरनेट से कोई चीज खरीद ही नहीं सकते, इनको इश्तिहार इंटरनेट पे देखने का फायदा ही कोई नहीं। इन्होंने क्या मतलब, ये क्या ई कॉमर्स कहाँ डेवलप होगी यहाँ पे? लोग तो बहुत हैं, ठीक है, फोन भी होंगे यार सस्ते उनके पास, लेकिन पैसे ही नहीं है। तो ये किधर से $1 बिलियन स्टार्टअप बने? $1 बिलियन स्टार्टअप वहां बनती है जहाँ पे लोग पैसे स्पेंड कर सकें बहुत सारी आपके टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के ऊपर। तो हियर आर सम नंबर्स, दीस नंबर्स माइट स्टार्टल यू। दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिस्ट्स who've done research over the years. पाकिस्तान की 40% आबादी मिडिल क्लास है। जो दुनिया में मिडिल क्लास की डिस्क्रिप्शन है, जब आप वो डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला पाकिस्तान पे आके फिट करते हैं, तो पाकिस्तान की 40% आबादी मिडिल क्लास है। Compare that with India. Only 25% of India's population is middle class. That's the Gini's coefficient. India has huge income disparity. Even though 1 अरब अरब की आबादी है, लेकिन सिर्फ 25% आबादी मिडिल क्लास है। पाकिस्तान की 40% आबादी मिडिल क्लास है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की मिडिल क्लास की आबादी की तादाद देखी जाए तो जर्मनी की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो बाकी बातें छोड़ें, पाकिस्तान का साइज छोड़ें, सब छोड़ें। पाकिस्तान के वो लोग जो कि जर्मनी में रहते हुए लोगों जितनी खरीदारी कर सकते हैं, उनकी तादाद जर्मनी की कुल आबादी से ज्यादा है। तो पाकिस्तान की मिडिल क्लास की तादाद जर्मनी की कुल आबादी से ज्यादा है। इनफैक्ट हियर इज अ नंबर दैट एक्चुअली ड्राइव्स अ डैगर इन योर हार्ट इफ यू वर इन माय इंडियन ऑडियंस, कि पाकिस्तान की हाउस होल्ड वेल्थ, मीडियन हाउस होल्ड वेल्थ पाकिस्तान में इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा है। पाकिस्तान की मीडियन हाउस होल्ड वेल्थ $10,000 है, इंडिया में $3,000 है। तो पाकिस्तान की जो मीडियन हाउस होल्ड वेल्थ है वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। अब ये सोचेंगे इंडिया में अभी तक कितनी $1 बिलियन स्टार्टअप्स बन चुकी है, पाकिस्तान में भी एक भी नहीं बनी। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटीज के वो तमाम $1 बिलियन स्टार्टअप्स पाकिस्तान में बनने वाली हैं और वो आप बना सकते हैं। हेंस योर मोमेंट माय फ्रेंड has arrived. Here's some more data just to convince you more about median household wealth. ये इसको ड्यूरेबल ओनरशिप डेटा कहते हैं कि पाकिस्तान के जो घर है वो क्या चीजें खरीद के उनके घरों में क्या पड़ा है इस वक्त। पाकिस्तान में 6% घरों में कारें हैं, इंडिया में 6% घरों में कारें। पाकिस्तान में 11% घरों में इंटरनेट है, 12% घरों में इंडिया में कंप्यूटर है। कंप्यूटर पाकिस्तान में, ये रेड जो है ये पाकिस्तान है। इंडिया में 32% घरों में मोटर बाइक है, पाकिस्तान में 41% घरों में मोटर बाइक है। इंडिया में 33% घरों में रेफ्रिजरेटर है, पाकिस्तान में 47% घरों में रेफ्रिजरेटर है। इंडिया में 15% घरों में वॉशिंग मशीन है, पाकिस्तान में 48% घरों में वॉशिंग मशीन है। इंडिया में 31% घरों में टीवी है, पाकिस्तान 62% है। इसकी खास वजह तो इंडिया में 83% घरों में पंखा लगा, पाकिस्तान के 91% घरों में पंखा लगा। आई कैन गो ऑन। और सिर्फ ये नहीं कि ये हम उनसे आगे हैं, हम आगे निकलते चले जा रहे हैं। 2001 में 2% घरों में कार थी, 6% घरों में कार है। 2014 में 1% घरों में कंप्यूटर था, 2001 में। 2014 में 12% है। मोटर बाइक 7% घरों में थी 2001 में, आज 41% घरों में मोटर बाइक है। तो 6 गुना पाकिस्तान के हाउस होल्ड की पेनिट्रेशन ऑफ मोटर बाइक्स has increased in 14 years, 6 times. So this is growth of Pakistan.
In every durable asset ownership, Pakistan has grown from 2 times to 6 times over these 13 years. Okay. Now let me quantify this opportunity for you. Pakistan में लोग सोचते हैं यार इंटरनेट स्टार्टअप में तो आईटी नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे इंटरनेट स्टार्टअप कर सकता हूँ? भाई इंटरनेट स्टार्टअप, ये जो टेक स्टार्टअप्स हैं, ये तो उन डोमेन में नहीं है जो कि पाकिस्तान के लो हैंगिंग फ्रूट है. लेट मी स्टार्ट विद एग्रीकल्चर. वी लिव इन एन एग्रीकल्चर कंट्री. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है. हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है. इनफैक्ट टेक्सटाइल है वो भी एग्रीकल्चर ही है, कॉटन है, खराब हो जाए तो टेक्सटाइल भी मर जाता है. तो वी आर बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री. और ये पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कपास का, कॉटन का प्रोड्यूसर है. ठीक, दुनिया का चौथा बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर है पाकिस्तान. 2.2 लेकिन हम 2.5 टन पर हेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. 1 एकड़ पे 2.5 टन निकलती है कपास हमारी, जो कि चाइना से आधी है. चाइना 1 एकड़ से 5 टन कॉटन प्रोड्यूस करता है, हम सिर्फ 2.5 टन कर सकते हैं, फिर भी दुनिया में चौथे बड़े हैं. शुगर केन, जिससे शुगर बनती है, गन्ना, 5वें हैं दुनिया में बड़े शुगर केन प्रोड्यूसर्स. ठीक है, हम 1 एकड़ से 63.4 टन निकालते हैं, जो कि इजिप्ट से आधा है. इजिप्ट इससे 2 गुना ज्यादा निकालता है. हम चावल के, राइस के दुनिया के 10वें बड़े प्रोड्यूसर हैं. हम 2.7 टन पर एकड़ शुगर राइस पैदा करते हैं, जो कि अमेरिका से 1/3 है, 30% है. ये दुनिया के टॉप ममालिक हैं इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यील्ड. तो सबसे पहली स्टार्टअप तो मेरे भाई आपने एग्री टेक में कर दी. सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि यार ये उदाहरण कॉफी करें, ये 2.5 टन पर एकड़ कॉटन जो है, इसको 3 टन पे ले जाओ यार, इसको 3.5 टन पे ले जाओ. इसको, इस पे टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए मेरे भाई. मतलब, एंड दिस वुड टर्न अराउंड द कंट्री. This would turn around the country. If this 2.4 was 4, 2.5 was 4 ton per acre, Pakistan would be a different country. हमारी जो टेक्सटाइल की 10-12 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट वो 20 बिलियन डॉलर हो जाएगी. तो पाकिस्तान बदल जाएगा काली. जो हम रोते रहते हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर, ये बदल जाएगा, काली बदल जाएगा. तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है यार. This is agri-tech, better seed, better fertilizer, better for pesticide, but also better technology. My company, Survey Auto, does a lot of agri mapping work. तो अगर आपसे इस वक्त पूछा जाए पाकिस्तान इस वक्त क्या क्या किधर क्रॉप लगी, किसी के पास डेटा ही नहीं. तो my company does that using satellite imagery analysis. Not very difficult to do, but we do it all the time. And a lot of companies buy this data from us. Likewise, पाकिस्तान का जो ग्रेन प्रोड्यूस होता है, ये तो हो गया ना यील्ड कितनी है. इस यील्ड से जो ग्रेन निकलता है, व्हीट, आटा, दाल, वो आधा जाया हो जाता है. पाकिस्तान में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हम ऐसे ही फेंक देते हैं व्हीट. वो कहीं रखने की जगह नहीं है, साइलोज ही नहीं है. पाकिस्तान में कोई साइलो, ग्रेन साइलो नहीं बना, आज तक बनी नहीं, बनाई ना पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने बनाई, ना प्राइवेट सेक्टर ने बनाया. ग्रेन साइलो ही नहीं, आधा ग्रेन जाया हो जाता है. Someone needs to do better logistics, better storage, better supply chain management. A startup is waiting to happen there. But imagine the size of that startup, sir. This would be the 4th largest agri-tech startup in the world. Imagine the size of that startup. That's the opportunity. Same for retail. Pakistan की कोई 53 अरब डॉलर की रिटेल इंडस्ट्री है. My company is very focused on the retail world. My survey of right now. लेकिन आप किसी से पूछे पाकिस्तान में दुकानें कितनी हैं, क्या बेचती हैं, किसी का डेटा नहीं है. मैं सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ. We're spending about 18 crore rupees, about $1.25 billion to collect data nationally in Pakistan. कि दुकानें किधर, क्या बेचती हैं, क्या बेचना चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्या है for Procter & Gamble, Unilever, and PepsiCo, and so on and so forth. उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उनको पता ही नहीं. They don't know. Because no technology data has ever been done in this space. But the size of the market, just so that you know, food and grocery is $53 billion annually in Pakistan. Education, पाकिस्तान के स्कूलों में 43 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं और 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं, जो उनके पास स्कूल जाने को नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, या वालिदैन उनको मजदूरी पे लगाया हुआ है और वो शाम को स्कूल जाते हैं, लेकिन शाम को स्कूल मुयसर नहीं. पाकिस्तान के जो इन स्कूल चिल्ड्रन है उनकी तादाद 6 गुना ज्यादा यूके से. यूके के अंदर तकरीबन 8 मिलियन पढ़ते हैं, तो हमारी 6 गुना ज्यादा तादाद उनसे. इतनी बड़ी मार्केट. अगर आप इनके लिए सोचे, आप कल एक एप्लीकेशन आते हैं इंडिया में, बायजूस है, जिसमें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ऐप के ऊपर आप लेक्चर ले लेते हैं. सोचे आपका लैब बनाते हैं और आपको ये बच्चे 10 रुपए देते हैं महीने के, और आधे बच्चे इसमें से साइन अप करते हैं. तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यू गेट पर मंथ? दैट्स द स्टार्टअप.
right? ये जो 22 मिलियन है, 2 करोड़ 20 लाख बच्चा पाकिस्तान का आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल में जगह मौजूद नहीं है, उनको एजुकेट करने का कोई आप तरीका निकाल लें थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एडटेक कहते हैं इसको, इसके थ्रू करें. कैन यू इमेजिन द अमाउंट यू कैन अर्न फ्रॉम दिस. फिनटेक, फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल इंडस्ट्री. पाकिस्तान में सिर्फ 15% आबादी एडल्ट पॉपुलेशन सर्व्ड बाय बैंक्स. 15%. 85% आबादी ने आज तक पैसे बैंक में रखे नहीं, अपने तक ही नहीं रख के सकते. 85%. Only 15% of Pakistan's adult population is served by banks. That's 100 million unbanked adults in Pakistan. 100 million, 10 crore unbanked people. सोचो a bank for 10 crore लोग. For 100 million, that's bigger than Bank of America, my friend. That's a huge financial institution, right? It won't be a bank. It would be an app on a phone, right? That's what it would look like. It won't look like a bank branch. ये नहीं होगा. लेकिन it will be a very different, it will be a technology driven bank, but that's the opportunity. Likewise, 30 लाख कारोबार है पाकिस्तान में जो अपने पैसे बैंक में नहीं रखते. सोचे, कारोबार है, कभी बैंक में पैसे नहीं रखे, कारोबार है 30 लाख. That's the opportunity. So Behral, I won't, let me skip 2 slides and not toot my horn, but now let me tell you why your moment has arrived. Remind you again why your moment has arrived. Your moment has arrived because आज से 6 महीने कबल मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं ये स्लाइड प्रेजेंट कर रहा था लेफ्ट साइड के ऊपर. स्लाइड ये थी कि पाकिस्तान में 2020 में पहले 3 महीने में $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई स्टार्टअप्स में. हमने छलांगे मारनी शुरू कर दी, तालियां चली शुरू की कि पाकिस्तान में $5 million have been deployed in 3 months in tech startups. Next 3 months, $18 million were deployed. Next 3 months, $9 million were deployed. Next 3 months, $23 million were deployed. Next 3 months, $21 million deployed. And that was the inflection point. That is when the rest of the world woke up and said, oh, we are missing out on this opportunity. Sir, in the last quarter, first quarter of 2022, $77 million were deployed. And in the last 6 months, $300 million have been deployed in Pakistani startups. In this year, or साल मुकम्मल हुआ, $300 million have been invested in Pakistani startups just because of the opportunity size. The entire world is converging towards Pakistan. They're looking for people like you who are working on cool, interesting ideas. They are fighting with each other to put this money into your great idea, because your great idea can solve such a huge problem. And the returns are so outsized, so big, that it's unbelievable. These are, by the way, the companies that are receiving all this money. Some are in e-commerce, some in education technology, some in health technology, some in fintech, some in transports and logistics. This guy, Jabberwock Ventures, is Cheetah, which is also one of our top fellows. He's raised 20 million earlier. I raised earlier. He raised another 25 now, and so on and so forth. And the rest are going into variants of e-commerce and so on. I will stop here now. My goal today was to come here and convince you that your moment, my friend, and you are like me. You are a middle-class, educated guy with belly, with fire in your belly. That's who you are. And your moment, my friend, has arrived. So take this moment, and I'm happy to take your questions. What a wonderful, wonderful set of slides, Umar, and I must commend you. I think, mashallah, I know you're already empirically inclined, but with this, with the startup and with the data, जो कि आपने प्रेजेंट किया आज, और बहुत स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक डेटा, हमें वाकई, I think these are all factual things which have been staring us in the face for the last many decades. In fact, if anything, we have been outgrowing ourselves in terms of population, which means both on the demand side as well as our capability to supply side. We've been growing, but we were already a success story as far as a geographic powerhouse was concerned. वाकई अगर हम इसको recognize करें, and with the help of what traditionally used to be the factors of production of land, labor, capital, and entrepreneurship, I think land and labor wala part are pretty much out of the window. Capital wali jo aapne last few slides kahi, वाकई I think in the recent times jo venture capital wale aaye hain Pakistan, angel investors aaye hain, और success beats success. जो recent हमारी ये stoking of the fire हुई है, उसकी वजह से वाकई FOMO, fear of missing out, has really come into this space, and I think thank you for sharing some very, very insightful data on which decisions can be made. Simultaneously, I think जो आपने कुछ opportunities present किए हैं, traditionally
आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जब हम स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं, हम बहुत टेक ओरिएंटेड स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं, whereas really I think the world has evolved into a service orientation which Pakistan is picking up in very fast, और एग्री टेक, फूड इंडस्ट्री रिलेटेड, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं which one could definitely partake in. So I think we just have time for a couple of questions which I'll pitch in on behalf of our students. Okay, Marshall, I think there was a briefly a slide in there regarding Plan 9, Plan X वगैरह. आपके opinion में, Umar, just two questions, if you could share some light on what seems to have happened in the recent past, जिसकी वजह से एक हमें ये हॉकी स्टिक जेकब नजर आया है, इंक्रीमेंटल एक्सपोनेंशियल बग के बूस्ट नजर आया है in our startups. What has changed in the last, let's say, 2 years जहाँ पे हमें massive acceleration नजर आई है? And then what can you encourage us to do as an institution of higher education कि हम इस चीज को accelerate and promote किस तरह कर सकते हैं? What can we inculcate into our curriculum, and what can we teach our students to become more plugged in into the realm of opportunities जो कि आज exist करते हैं? So बहुत अच्छे सवालात हैं. एक तो you know, and you know this, when I was in my previous life working in the public sector, one of the things we did was to set up sort of the first startup incubator in Pakistan. Plan 9 इसका नाम था. और उस वक्त इसको करने का मकसद ये था कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में एपिटाइट नहीं है to sort of invest on risky new ideas that are being built by young people. So the public sector should trailblaze a little bit, should underwrite that risk, and therefore produce a deal flow of startups जिसके अंदर फिर प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट कर सके. तो ये मैंने 2012 में सेटअप किया था. फ्रॉम 2012 to about 2015-16 ये कोई 200-250 startups were incubated by us, and of course a lot of them closed down, but some of them survived, and a lot of them then went on to become successful. ये वही entrepreneurs हैं, या तो उन्होंने उन्हीं ideas और companies के लिए पैसे रेज किए हैं, या they pivoted on a bigger idea and have raised investments. तो एक तो ये कि supply side का critical एक threshold था जो कि reach करना जरूरी था. तो from the incubator that we built and then many others that were set up on the same format, यूनिवर्सिटीज में बने, लम्स में बना, कराची में नेस्ट आयो बना, इस्लामाबाद में बना, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ फंड किए. तो शुरू में जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स बने, इनसे एक डील फ्लो ऑफ स्टार्टअप्स आ गई, विच मीन्स कि द इनिशियल आइडिया, उसको इस हद तक रेडी करना आइडिया को किसी इन्वेस्टर से बात की जा सके, वो इन इंक्यूबेटर्स ने इनेबल कर दिया इन स्टार्टअप इन एंटरप्रेन्योर्स को. तो दे कुड नॉट जस्ट पुट टुगेदर अ स्लाइड डेक बट आल्सो शो, हे मैंने ये बनाया भी है और ये 15 लोगों ने इस्तेमाल भी किया, आप मुझे $1 लाख दे. सो दैट बिगैन टू हैपन. So that I think was an inflection point to a large degree in Pakistan's startup ecosystem. Then of course a lot of us very loudly spoke about Pakistan's potential and why this needs to happen more and more here, globally, internationally. So सबसे पहले wealthy families in Pakistan began to put in money. पढ़े लिखे उनके जो second generation थी, they started to deploy money. कोई $2 लाख, कोई $2.5 लाख, etc. करते करते फिर the word spread to their friends in abroad, and then to investors abroad. So investors abroad तो actually 4-6 महीने पहले का फिनोमेना है, जिसमें पहले एक इन्वेस्टर ने पैसे डाले, फिर उसने दोस्तों को बताया कि यार I've just put in money in a startup, and these are people who've educated in US universities, हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, पाकिस्तान गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो कोई रिस्क क्या है? रिस्क कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये नहीं चला आइडिया कुछ और चल जाएगा. मतलब ये Airlift started out wanting to do shared buses, shared logistics. They're now doing grocery. American educated smart kids who are sitting on huge opportunities, they can pivot in any direction they want as long as they have enough capital. All of those problems are worth solving. So that's what happened. और ये 4-6 महीने पहले I think it finally began to happen, and people like Atif, Awan, etc. उन्होंने he was VP at LinkedIn, उसकी connections भी थे, he understood this, he deployed some of his own initial capital, and then I think the traction is built. अब मतलब मैं पाकिस्तान में स्टार्टअप कर रहा हूँ, रोज मुझे एक या दो ईमेल आती है कि पैसे रेज कर रहे हैं from US VCs, and मतलब मैं impolite हूँ almost उनके साथ कि आप प्लीज और दोबारा ईमेल नहीं करनी. अभी I'm not there yet. I want to do a large funding round, but I will do it on my terms. I've played this game for long enough to know when to raise those funds as well. लेकिन तकरीबन हर रोज, मतलब from $5 billion funds to $30 million funds, हर रोज there is probing and investigation के what's going on. My LinkedIn fills up every day with VC requests to
connect and so on. तो इस तरह से this is really heating up and this whole thing is happening. एक तो ये दूसरा ये कि to your students I think when I set up ITU we did a few good things. एक तो give your students an opportunity to get involved in independent research with your professors, because I saw that at MIT and अच्छी startups are backed by good research. मतलब they're innovative, they just don't execute, they also invest in some degree of innovation. तो एक तो इनको जरूर give them. MIT में हमारे पास हुआ करता था, it's called the undergrad research opportunity program, UROP कहते थे, which means that students could choose to work with a professor for academic credit. तो कोर्स ड्रॉप करके वो किसी प्रोफेसर की लैब में काम कर सकते, तो बड़ा यूजफुल है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को बार बार ये बताना, जो भी बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी है और आप कर सकते हैं, और ग्रेजुएट करके ICI में नौकरी मत ढूंढें और शेल में नौकरी मत ढूंढें, आप एटलीस्ट टेक स्टार्टअप बना सकते हैं। तो ये कहना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन और मे बी यू नीड वर्क एक्सपीरियंस टू बिफोर यू डू इट, लेकिन ये बिलीफ के ये किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद IT में तो सिर्फ स्किल सेट चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल भी हैं वो कोई IT ग्रेजुएट्स तो नहीं है, मतलब दे आर ऑल काइंड ऑफ सम इज इन लिटरेचर और सोशल एंथ्रोपोलॉजी व्हाटएवर, बट दे हैव द बिजनेस सेंस टू पार्टनर विद अ टेक गाय एंड वर्क ऑन इट। तीसरा ये कि अगर आपको इंक्यूबेटर अपने स्पेस में खोल लें, इसका मतलब ये है कि मे बी ओवर द समर्स और वंस पीपल ग्रेजुएट दे हैव एन अपॉर्चुनिटी एट योर टैब, मतलब उनको 20,000 स्टाइपेंड देते थे, कंप्यूटर फ्री कर देते थे, ऑफिस स्पेस देते थे। तो इफ यू हैव स्पेस, गिव दीस किड्स अ स्पेस। वो बाद का फाइनल प्रोजेक्ट करते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो पहली कल्मिनेशन तो ये है कि फाइनल प्रोजेक्ट को देखा जाए कि कोई आगे कदम उठा के प्रैक्टिकल किया इस तरह। पहला कदम तो यही है। एंड इंसेंटिवाइज योर प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स। अमेरिका में बहुत ये रिस्ट्रिक्टेड है बाय द वे, कि अगर आप किसी स्टार्टअप पे काम करें तो यूनिवर्सिटी टेक्स अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दैट। सरकारी यूनिवर्सिटीज आल्सो हैव HCSA पॉलिसी। हमने भी फॉलोड अ पॉलिसी कॉल्ड पॉलिसी 73 एट वाटरलू, बड़ी मशहूर पॉलिसी है, व्हिच मींस कि एनीथिंग दैट यू इन्वेंट इज योर्स। तो शुरू में तो इस तरह इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि यार पैसे हम लगा रहे हैं, यूज आवर लैब्स एंड आवर रिसोर्सेज एंड आवर मनी, बट गो आउट एंड क्रिएट ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज एंड डू वेल। And from that you would see a lot of this activity. अब ITU में सिर्फ देखना, हमारे हर प्रोफेसर की कंपनी है ITU, and that's because they were encouraged in this direction. And actually, in fact, in ITU we gave them 1 day off every week कि भाई ये दिन आपका है, आप इसको जाके जो मर्जी करें, आपने पढ़ाना नहीं। So that's what I think little policies like this could really kind of encourage, और स्टूडेंट्स को भी जरूर encourage करें कि यूरोप करें, उनको इंडिपेंडेंट आइडियाज फंड को क्रिएट कर ले यूनिवर्सिटी में। कुछ भी नहीं चाहिए, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अगर 5 स्टूडेंट्स को मिल जाए टू वर्क ऑन एन इंडिपेंडेंट आइडिया फॉर 3 months, तो कंप्यूटर खरीद लेंगे, दे गो ट्राई दैट आउट एंड सो ऑन। एंड आल्सो फ्रॉम जस्ट अ CBA पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब you attract much better students and much better faculty because of that. So in many ways that's the kind of investments you would want to make right now. Okay, there's an independent student entrepreneurship fund or something like this, where the university is willing to put in पहला 5 लाख रुपया, and then do the investment meet. सबको याद है, आप मेरा आदमी आपको बुलाया करते थे Plan 9 में as an investor and people like you कि भाई हमारी स्टार्टअप से मिलें, बात करें। तो आप सबको जानते हैं आपका नेटवर्क किस तरह का है, तो why don't you invite all the Babar Alis and the Hussain Daouds and everyone else and put them in a room with these entrepreneurs, वो advice भी देंगे और हो सकता है इन्वेस्ट भी करेंगे, और that's exactly how some of these startups happen. So I think that's all positive and useful thing to do. तो ये कि इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स को करने की फैसिलिटी दें, वक्त दें, और यूरोप प्रोग्राम शुरू करें, वक्त दें, थोड़े से पैसे दें, लैब्स उनके लिए ओपन करें फॉर देम टू वर्क ऑन स्टार्टअप आइडियाज, और फिर इन्वेस्टर मीटअप्स तरह करवाएं। आपको वैसे भी जाती है न्यू यूनिवर्सिटी, यू नीड टू पुट द वर्ड आउट, सो इनवाइट ऑल दीज बिग बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज, क्योंकि सेकंड जनरेशन है, वी नो ऑल ऑफ देम, सारे हमारे आसपास के पढ़े लिखे की वो जनरेशन है सारी। So call Shehryar and Ali at Fatma Ventures and Shehryar at Treat, and इन सबको बुलाएं, and Monty and and Faisal Daud, and इन सबको बुलाएं, इन सब आने की जरूरत है आपकी यूनिवर्सिटी में। आए उनको बताएं कि भी there is all this going on. They can't get a allocation in a big round right now. They're wealthy, but they're not that wealthy. But they can put in 2 crore rupees in a new startup in your facility which is working on educating school children. तो मुझे लगता है कि वो opportunity है, and that one should encourage them to do. So just by little steps, you would see that this will all add up, and you will eventually get 2-3 out of that 50 startups that get created by your graduating batch. कोई 4-5 ऐसे निकले जो कि survive कर जाएंगी and would become big businesses. Thank you Murad, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि I think ये जो real world success stories हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत exist करती हैं. Yes, a lot of them from legacy businesses, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, a lot of the
legacy business houses have put together अपने angel funds and small VC funds जो कि फिर co-invest करते हैं, bringing in other people. Due diligence करना उनके लिए आसान है. And with COVID hopefully mostly behind us, we have turned the corner. तो हम definitely will be putting together a list of successful people, business people जो कि आके यूनिवर्सिटी में हमें इसके बारे में बात करें. We are technically out of time, लेकिन डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, which I asked all our guests, कि माशाल्लाह the Dr. Umar Saif we see in front of us today obviously has gone through his own set of experiences in life, in education, academics, professional life, and sitting in front of us today. तो उसी को जहन में रखते हुए आप आज हमारे, if you were to do this all over again today, it's a very different landscape. आप हमारे students को क्या कोई parting words impart कर सकते हैं? We have of course prospective students coming in, we have current students जो हमारे साथ हैं. What would be your few parting words of advice to them as they go through their academic career and come out into their professional lives? Well, एक तो ये कि you need to be of course very hardworking and motivated and so on. But आप एक नई यूनिवर्सिटी में students हैं. I don't know how wealthy backgrounds you guys come from, but I have two kids. They both go to HSN. मेरी मर्सिडीज में जाते हैं स्कूल में. तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं जब HSN में जाया करता था तो मैं स्कूल की वैगन में जाया करता था. And I would get dropped off at the gate of the school and would walk in while Salim would come on his Mercedes or BMW or something. And most of my class fellows would come on similar vehicles and so on. So वहाँ से शुरू करके मैं उर्दू मीडियम स्कूल में, मेरे पास फौज में थे तो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता था 5वीं जमात तक. तो पहले 2 साल मुझे समझ नहीं आता था ये टीचर बोल क्या रहा है. So from that you could one could progress, and from that disadvantage, if you keep at it and work hard, you could still make it. I haven't made it yet, but मुझे लगता है कि the ability to create something, work on interesting ideas and create something is your foot in the door to at least have a shot at changing your life and lives of people around you. And therefore, I don't know whether you guys come from privileged backgrounds or not. I have this feeling that maybe a lot of you don't, and don't let that be the obstacle that holds you back. तो एक तो ये बहुत, मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ यार, मतलब हम तो, मैं वैगन पे जाया करता था, तुम लोग मर्सिडीज पे जाते हो, तो give me a reason why you can't get into Harvard and so on. And that I think is an important thing to hold here. एक तो ये. दूसरा ये कि पाकिस्तान में of course the system is stacked against you. वो तो एक problem है. Despite ये tech startups and so on, मतलब मुश्किल है, ऐसे माशरे में आगे जाना मुश्किल है. तो you need sort of a will to progress. That's very, very important, and something that where the system can't beat you down. So ये पाकिस्तान में सबसे important skill है आपकी, you don't let the system beat you down. You continue to work hard with a degree of honesty and sincerity. मेरा एक बड़ा favorite quote है. ये है Richard Feynman का. He was a physicist, very famous physicist, Caltech physicist. He's written many books. If you're inclined towards physics, I am inclined towards physics. So he also has a set of lectures called the Feynman lecture. So he has a quote. The quote is that that the first principle is not to fool yourself, and you are the easiest person to fool. तो कभी अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए. अपने आप से रियल रहें, अपने आप से सेल्फ क्रिटिकल रहें, और कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. तो अपने आप को तसल्ली दे देनी कि नहीं ये मुल्क ही खराब है, इधर लोग ही सारे खराब हैं, सिस्टम ही खराब है, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा. So therefore, you'll have to be. Another quote is कि if you're not part of the road, if you're not part of the steamroller, you're part of the road. So make sure that you're part of the steamroller, and put yourself on that steamroller and drive ahead, soldier on, and don't let anyone stop you. How wonderful! Thank you, sir, for sharing. I think steamroller and road wale bhi बहुत एक interesting analogy, and I'll say as our from our side parting words के पाकिस्तान में जो दिक्कत I think लोगों को होती थी, for example, to come into entrepreneurship, एक idea को maturity में लाके कंपनी में खड़ा करके और एक success बनाने में, the startup
was difficult. Sustaining was easy for a lot of things. Unlike, let's say, developed markets, जहाँ पे वहाँ पे startup करना आसान है, sustain करना नहीं, because there's a lot of competition. यहाँ पे me too-ness and following जरा time लगता है लोगों को. तो वो कहते हैं ना अमेरिका में, you have to drink your Kool-Aid and make the others drink your Kool-Aid also. तो वो I think to spin that story is a lot easier in Pakistan, I feel now. And बिल्कुल आपने I think हमें बहुत valuable words of advice दिए during the session and after as well just now. But most importantly, Umar, thank you for sharing some, as I said, very insightful data. And nobody can deny facts. We can all have our opinions. और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि don't feel that the system is stacked against you from that perspective कि जी पाकिस्तान बहुत खराब है. पाकिस्तान has happened, I think, in a lot of ways, and we just need to inculcate this belief कि जी आपने भी उसी घोड़े पे सवार होके you can ride that wave. The wave has started. So we will encourage जो आज हमारी audience हमें सुन रही है live, and of course we have repeat views जो बाद में हमें सुनेंगे. हम सारों को encourage करेंगे कि believe in yourself first and believe in the system around you, because it's not as bad as you think. Umar and I are products of the same system. We're sitting in front of you today in alhamdulillah very decent positions, और आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं. Time is on your side, not on Umar and my side anymore, but we will be supporters, I think, to support the success inshallah of all you guys. And with that, Umar, मैं कहूँगा हम बहुत मशकूर हैं आपके कि आपने हमें ज्वाइन किया आज और हम अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी सुन रहे हैं. एंड इंशाल्लाह, एज आई सेड, with COVID, hopefully we have turned around the corner. हम इंशाल्लाह very soon अपने कैंपस पे आपको इनवाइट करेंगे for a guest lecture to have a broader version, a larger version of the set of slides that you presented, or a topic of your choice to help I think open up the minds. We are an institute of higher education, not rote learning, so we must inculcate this element of plugging the mind in a lot of ways. जो आज हमने clutter जमा किया, where we want to rewire that and make sure that we're producing analytical minds as we come out from as graduates of any university, including international. So with that said, thank you very much for your time, and inshallah we shall be in touch for a future session as well. Thank you, Janab. बहुत मेहरबानी. Such a pleasure. Thank you. Thank you so much. Okay.